Good afternoon, dear student and concerned teacher present in the class. Welcome to everyone to this live class from Virtual Studio, District Education Office, Sundargarh. Dear student, you know, education is very important for us. Just like food, shelter and clothes, we can include education is a basic necessity of our life in the present days. Because education brings modification in the behavior and it turns a biological human being into a social human being. So education we must have, and we must educate our child, our nation. So dear student, with this I am with a lesson from your non-detail part, a very interesting story that you have in your book, that is we are going to learn today. So without wasting our time, we will proceed towards the smart board and we will continue our class. Dear student, let's proceed and let's explore what is the lessons of today's particular topic. So let's discuss. Okay, dear student, right now you can able to find the title of the particular story, that is the first step from your non-detail part. So we will explore the concept and the theme and the message behind this particular story. So today I am with the part 1 of this particular story. So let's proceed. First of all, an activity for all of you. So you need to identify the picture. So students from different schools, you can raise your hand. Those who have know the personality very well, you can recognize, you can raise your hand. I am going to ask you. So let's proceed and let's identify these great personalities of our country. So first picture, in white sari, can you identify this lady? Can anyone, student from any school, you can answer to the question. Identify, recognize her. Yes, I can able to hear you. Try to answer. First picture. She is a very prominent leader, we can, and she was a leader, we can say, a very known figure in the nation. So can you identify the lady? Yes, student from other school, you can also try. Okay, so let's come to know the lady, that is Pratibha Devi Singh Patel. You know, she is the first president of India as a woman. From women category, she is the first woman president of India, Pratibha Devi Singh Patel. Okay, so she is a very renowned personality in our country, we can say. And next to her, you need to identify an Adivasi lady, an Adivasi woman. She is also nowadays, she is very famous. Her personality is reflecting her enthusiasm for development. Very good, very good. That is Drupadi Murmu, and she is the present president of India. Okay, so we can call Srimati Drupadi Murmu. Very good, very good, very good. Drupadi Murmu. Yes, good. Next to it, can you identify who is she? Yes, student, you can identify. He is also presently working in a renowned position, in a very top position, and handling or managing all the things that is related to nation. So can you identify this lady, this great lady, we can say, this strong lady, we can say? Yes, she is none other than Nirmala Sitharaman. Okay, she is none other than Nirmala Sitharaman, the present finance minister of our country. Okay, so she has done her graduation. Yes, just wait. So she has done her graduation, post-graduation, and MPhil in economics, and she is presently working as the finance minister of the country. Okay, just wait, just wait. I'm coming to the next particular picture. Already you have identified, and she is Kalpana Chawla. So this is the picture of Kalpana Chawla and aeronautics, we can see, and all these particular great personalities that we have discovered here, they are the renowned personality of our country. They have done remarkable contributions in the nation building and they have made their name
in the country. They made us proud in international affairs, we can say. Okay, so in international level, they have made our country feel proud. So we are proud of all these particular ladies. So dear students, this is only possible whenever we have educate our girl child. So education brought a remarkable changes in women. And you can find women in various fields. Women in politics, women in science, women in finance, in every sector nowadays you can find women. Okay, so dear student, so this is another picture I can able to find over here. You can also able to find, this is a lady, Malala Yousafzai. You can able to find her in this picture. She is from Pakistan. And at the age of 17, she got the Nobel Prize, dear student. And she fought for the rights of the women. She fought for the right of the women, that women must get educated. So she brought a revolutionary in the whole world and got the Nobel Prize. So right to education, it must be also same for boy and girls. So as girls are getting neglected in the previous times, women in different countries, they fought for their rights. So she is a girl, we can say, a girl at the age of 17 fought for the rights of the girls and bring a remarkable changes in the society related to girls' education. So dear student, nowadays we are educating our girl child and we are making our nation proud. Okay, so we can say, if we educate a boy, or if we educate a boy, we educate an individual or educate a person. But when we educate a girl, we educate a family and whole nation. It means educating a girl in the present can be a miracle in the future, because they are contributing a lot. They will contribute a lot and a miracle changes will come in the country. So in this regard, with a very beautiful lesson we are going to learn today, dear student, that is the first step. And these are the steps taken by the government to make our women empower. So the steps are, you can able to find the National Commissions for Women Act 1990, Sukanya Samruddhi Yojana, Beti Bachao, Beti Padhao, and many more other schemes. It's bringing revolution in the field of education, in the field of development, and the participation of women in all this field. So dear student, so in the present particular story, we are going to learn how a girl is interested to get education, but in the initial phase, she struggled a lot. So at last what it happened with her, she can able to get education or not, we are going to explore. So the first step and its first part, let's proceed towards our content. So the story begins with a direct speech statement, you can able to say. So who told that statements? Ammu, wake up and make tea for me. A hand roughly shook the 10 years old girl. Dekho, Ammu, wake up and make tea for me. Wake up means nidor uthi jiba. To taku डाकरा पड़ी किए डाकी आम देखा अम्मू बोली डका जाइए गोटे गर्ल को ओके से झीटी शोई देखी पार्थव आराम से शोला से झीटी निदर उठागला किए डाकिला आम एक्सप्लोर करवा वेक अप एंड मेक टी फॉर मी मो पाई चा तैयारी कर तापरे ए डाक शुणा जाइए से झीटी कौन करछि ता हाथ को मलिछि बा दलिछि जेतेबेले निदर तुम उठ केंती कर आलस भांग एवं आखि को टिके रफ करि थाओ. So in that particular time a hand roughly shook the 10 years old girl awake. Awake माने हला निदर उठी जिबा, awake माने निदर उठी जिबा. So dear students, सही समय रे अम्मू जी की 10 years old girl थिला डाक शुणी की से निदर उठी पड़ला एवं तार आखि को से दलिछि बा रगड़िछि एवं उठी पड़िछि. अम्मू yawned and rough off the sleep from her eyes. So in that particular period of time, se kon karichi dekho, Ammu yawned.
निद लागुले कौन होता है वी आर डूइंग यार्निंग यार्निंग मीन्स ओपन द माउथ वाइड एंड इनहेल स्पेशली बिफोर स्लीपिंग जिते तुम हाई मार था तापर निद आसता है ना so after that you are getting sleep so whenever someone is observing and you are getting tired and you are doing यार्निंग मतलब जिते तुम यान करूथा हाई मारी था से समय जन तुमको कौन कही था निद लगुच कि शोपड़ so before going to bed we are feeling that particular situation so here also it came Ammu yarn and rough off the sleep from her eyes तो देखो से हाई मारी जिते निदर उठी बिकज तार निदटी कंप्लीट है कहीं से शोई कहीं जड़े डाकी देइछंती तो हमें किए टांकू डाकिले हमें देखिबा नेक्स्ट स्लाइड को जीवा सी रोज विथ अ साय एंड टुक द वेसल्स ऑफ मिल्क हर फादर हेल्ड आउट ओहो ताकू तहले ता बापा डाकुथिले ओके सो सी रोज विथ अ साय साय माने दीर्घ श्वास बुझी पारलो तो से हाई मारुची तापर ओटे दीर्घ श्वास नेइची एंड टुक द वेसल्स ऑफ मिल्क तापरे मिल्क पात्रटी से नहीं जाइछि कहा पाखरु ता बापांको पाखरु ता बापा आसीकी ताकू उठेचंती मिल्क पात्रटी ताकू बढ़ेचंती एवं कहिचंती अमु उठी पड़ मो पई चा तयारी कर ओके सो वी हैव अंडरस्टूड क्लियर अप टू दिस नेक्स्ट वी विल प्रोसीड हर आईज वाटर फ्रॉम द स्मोक दैट कम आउट एट सी ब्लू ऑन द फ्लेम्स द स्टूडेंट एज यू नो in the previous time people are making their food out of firewood माने निया जळे की firewood रो व्यवहार करी के समान खाद्य प्रस्तुति करथिले the same situation here that girl अम्मू से चा तयारी करची कोथरे तयारी करची ना काठ जळैची सेथरु स्मोक बाहरीची सो हर आईज वाटर फ्रॉम द स्मोक तो तेस्त्रे जतले धुआं बाहरीची स्मोक माने धुआं बाहरीची तो कोन हेची त आखिरु पानी बाहरी पड़ची केम आउट एट सी ब्लो ऑन द फ्लेम जतले से फुंगीची आखिरु पानी बाहरी पड़ची माने जळीची आखी एवं बाहरी पड़ची पानी नेक्स्ट सो फ्लेम्स मीन्स फायर and sigh means long breath that is dirgha nishwas okay so in this way we have understood up to that next come outside I want to talk to you he order ethi ta bapa puni ta gote order deichanti kon order deichanti come outside tu tige bahar ku as ma I want to talk to you mu to saita katha hebi so in that particular period of time what it happened ammu cha nei ke assi you can able to find in the picture ammu carried the glass of tea and followed her father ता बापा को से अनुसरण करची ता बापा को पाखु आसी बापा को चा बढे देची एवं से तांकु सुनुची ता बापा कोन कहउचंती yesterday evening ता बापा कहउचंती yesterday evening I learned that the new owner will be coming any day to occupy the house dear student एठी तापरे आमे टिके एक्सप्लोर करिवा ता बापा एमती काई कहउचंती yesterday माने गतकाली जो दिन बीती जाईची माने जो दिन घटना घटी घटना माने जो दिन चा पिउचंती माने चा आनी कि से देइची अम्मू तारो प्रीवियस डे रे yesterday तो yesterday इवनिंग रे I learned से कोच I learned एठी learn कोइले कोन से जानिया को पाइची learn माने शिक्षा लाभ करिवा बा शिक्षा लाभ कला किंतु एठी learned माने कोन से जानिया को पाइला so learn means come to know जानिया को पाइला ना कौन जाने को पाइला द न्यू ऑनर विल बी कमिंग एनी डे टू ऑक्युपाई द हाउस एठी को गुटे हाउस कथा कुहा जाईची एवं से कहिची जे सेही हाउस को गुटे नुवा ऑनर आसुचंती एवं ऑक्युपाई करूचंती ऑक्युपाई करिवे माने कोन टू लिव इन और यूज ए हाउस बसवास करिवा बा दाखल करिवा माने जो घरटा थिला से घर सहित अम्मुर बापांकर कोन रिलेशनशिप हमें एक्सप्लोर पुनी करिवा ओके तो सेठी गोटे घर कथा कुहा जाईची एवं कुहा जाईची जे मु सुनिया को पाइली जे सेही घर को जणे नुवा ऑनर आसीकी रहिबे ओके अंडरस्टूड नेक्स्ट पुनी से कहले ही बिगिन I was asked if a reliable maid would work there and I suggested your name at once एवं मते पचरा गला I was asked माने मते पचरा गला मते प्रश्न करा गला if a reliable maid reliable dear student reliable refers to trustworthy जे की विश्वस्त जहा को विश्वास करी हुए ओके
तो को माने ट्रस्टवर्दी ही थांती जो माने कथा मानती घर चोरी किछि करंतिनी एवं से घर को निजर बोली मानती एवं व्हाट एवर द पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज देयर दे विल कीप सेफ से घरे जहाँ भी किछि प्रॉपर्टी अछि ताकू तार तदारक करिवे ताकू माने हार्म करिवेनी किछि चोरी हारी करिवेनी तो तांको हमें रिलायबल कहि परिबा रिलायबल मींस ट्रस्टवर्दी बा विश्वस्त विश्वास योग्य तो एठी जो घर कथा कुहा जायछि से घरे गोटे मेड पाई रिलायबल मेड पाई काहांकु कुहा जायछि खोजिबा पाई ना अमुर बापांकु कुहा जायछि अमुर बापा हठात सेठी संगे संगे कहार ना नै निचंदी देखो से कहिचंती आई वाज आस्क्ड इफ ए रिलायबल मेड मेड माने कोन सर्वेंट ओके वुड वर्क देयर सेठी कही रिलायबल मेड मिलिबे कि काम करिया पाई तो अमुर बापा रिप्लाई दे दैछंती कोन बोली I suggested your name at once. अम्मू को से कहते अम्मू मु तो ना नहीं गली हठात संगे संगे मु तो ना नहीं जाइछि मु तो ना नहीं जाइछि हठात मु संगे संगे तो ना नहीं गली ओके एंड I suggested your name at once. It means maid means a female servant चाकरानी जाऊ कहा जाए at once means तुरंत संगे संगे मु तोर ना टा नहीं गली हाँ हाँ मो झियो अच्छी से कहिथिबे बुझि पारल तो एई कथा से आसी काहा कहउचंती एबे तांको झियो को कहउचंती अम्मू को अच्छा तांको एतले चाटा दिया गला से चा पीले ना नहीं हमें देखिबा सो नेक्स्ट स्लाइड को जिबा अम्मूस फादर चेलप्पा एठी हमें आ गोटे जिंस जाने को पाइले अम्मूस फादर नेम वाज चेलप्पा वाज द वॉचमैन एट द बिग हाउस ओ एठी गोटे बड़ घर जोठिकार वॉचमैन थिले ताहेले अम्मूर बापा Okay, so we came to know two things in this particular sentence. What the things we came to know? Na Ammur Vapanka na Cheloppa me janle. And another things, Ammu's father was the watchman at the big house on the hill. So jo house kotha kuha jauchi, that is the big house on the hill. And in that big house, Ammu's father worked as the watchman. Okay, so dear student, एठी हमें दीटा जिनसा एक्सप्लोर कले अम्मू फादर वॉचमैन थिले एवं अम्मू को बापांक ना थिला चेलप्पा नेक्स्ट जीवा द ओनर माने घर मालिक द ओनर हैड डाइड अ कपल ऑफ मंथ्स एगो एंड दे हैड हर्ड दैट he had left the house to his sister's daughter dear student एठी हमें किछि देखिबा the owner had died जे भी सेही घररो पुरातन ओनर थिले बा मालिक थिले तांकर डेथ ही जाइछि ना केबे डेथ हला अ कपल ऑफ मंथ एगो कपल मीन्स टू दी मास आगरु कपल मीन्स दी बा जोड़ा बा जोड़ी जहाको हमें कहि परिबा तो दी मास आगरु कोन हिछि सेठिकार जे थिले ओनर तांकर डेथ ही जाइछि तो डेथ हेबा परिवर्ते they had heard they refers to the neighbors okay they refers to the neighbors they had heard that he had left the house to his sister's daughter the people in the neighborhood wonder when the new owner would come to live there so including Chelappa the neighbors they came to know they had heard that this particular house the house that is on the hill जो big house टी हिल रे अछि बा पर्वतर से पाखरे अछि बा पर्वत ऊपर जोटा हिल ऊपर जोटा घरटी अछि बड़ा घरटी अछि सेही घरर मालिक मृत्यु हेला परे तार मालिकाना काहा को दिया जायछि ना गोटे लेडी को दिया जायछि से लेडी किए ना टू हिज सिस्टर्स डॉटर से मालिकंकर भौणीर झियो सिस्टर्स डॉटर तो आमे जते बेले रिलेशनशिप काढिबा कोन हिजिबो हाउस ओनर रो से कोन हिजिबो देखो आमे पढि देबा टिके टू हिज सिस्टर्स डॉटर तमे भाणीजी बोली कहि थाओ नाइस बोली कहि थाओ ओके तो ए हिसाब रे वी विल लर्न हियर नेक्स्ट आमे जिबा द पीपल इन द नेबरहुड वंडर when the new owner would come to live there जेहेतु से शुणी नहीं चंती जड़े नुआ मालिकाणी आसीबे एवं सी होचंती पुरातन मालिकर भाणीजी बा तांकर सॉरी एठी हमें गोटे मिस्टेक करूजे सिस्टर्स डॉटर यस हमें भाणीजी बोली कहिबा हां सिस्टर्स डॉटर भाणीजी बोली कहिबा सिस्टर को डॉटर को हमें कोन बोली कहिबा सपोज यू हैव ए सिस्टर सपोज यू आर ए बॉय एंड यू हैव ए सिस्टर you have particularly
the child of that particular sister तो तुम ताको कोन बोली कहबो भणजा बा भाणजी बोली कहबो तांकर जदी पुओ हेतिबो भणजा बोली कहबो तांकर झियो हेतिले भाणजी बोली कहबो तो सेही सब रिलेशनशिप questions it may be asked to you. So these are just like reasoning type questions. Okay, that blood relationship type question also it may be asked to you. So be careful. The people in the neighborhood wonder when the new owner would come to live there. तो इटे हम एक्सप्लोर कर देले से माने खोजुथिले वंडर करथुले माने से माने खोजुथिले जानिया को आग्रह प्रकाश करथुले किए से मालिकाणी केमितिका से केबे आसीबे ए भलिया तांको मन रे गोटे उत्कंठा थिला गोटे आशा थिला से केमिति थिबे कोन थिबे कि भलिया थिबे बोली तापर नेक्स्ट स्लाइड को जिबा द मनी विल बी यूजफुल चलप्पा कहि चलिछि काहाकू ता झियो अनुकू सॉरी अम्मुकू द स्टूडेंट you can able to find in this particular picture आमे गोटे जस्ट सैंपल पिक्चर नैचे ओके तो एठी पिक्चर मु काहे कि नैछि ना सिप हिज टी एटु जो वर्ड अछि ताकू देखिबा पे तो आमे पूरा पढि देबा द मनी विल बी यूजफुल माने कोन यूजफुल माने दरकारी दैट कैन बी यूज said thoughtfully as he sip his tea जते बेले चाटी को से सिप करथला धीरे 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 पिउथला सेही समय रे से टिके थॉटफुल हे भावना रे कोन कहउथला ना से मनीटा यूज हबो को मनीटा यूज हबो अमु काम करिवा परिवर्ते ताकू जो पावनाटी मिलिबो ताकू जो मनीटा मिलिबो सेटा यूज हेई परिबो तो एठी अमु संगे संगे क्वेश्चन कर देला व्हाई अमु आस्क्स क्यूरियसली पैसा कोन हबो बोली से पचारलानी क्यूरियसली माने माने से जानिया को टिके आग्रह प्रकाश करछि आंसर अछि गला बिकॉज़ आई नीड मनी टू सेंड चिन्नी टू स्कूल एठी तो आपा कहउचंती कारण मु से पैसा आवश्यक एथि पय करूची बिकॉज़ टू सेंड चिन्नी टू स्कूल हमें चिन्नी को स्कूल को पठेबा सेथि पय मते पैसा दरकार एबी ये चिन्नी किए हमें देखिबा हर फादर रिप्लाइड कॉटली एठी कॉटली माने कोन डियर स्टूडेंट रूडली रुक्ष भाव रे काहे के ना मते से पैसा दरकार आ मु पैसा आसले चिन्नी को पठेबे स्कूल से रूडली एंती आंसर देले ओके तो हमें देखिबा चिन्नी किए चिन्नी इज अमुल्स लिटिल ब्रदर डियर स्टूडेंट एठी चिन्नी जी थिला सी होची अमुर लिटिल ब्रदर अमुर छोटो भाई तो एबे अमु ए कथा सुनी कोन आंसर दोची व्हाट अबाउट मी ताहले मोर कोन हबो I would like to go to school too. मु मध्य स्कूल को जीवा पय चाहूची अम्मु कहिला so in this way dear student here you can able to find the eagerness of Ammu that she also wants to go to school but here her father only want to send to Chinni to school so why these things it happen only here तो आपनकर ए भलिया चिंता धारा काहे की आमे टिक एक्सप्लोर करिवा व्हाट इट हैपेंड टू द नेक्स्ट आमे देखिबा नेक्स्ट स्लाइड को जाईकी यू आर ओनली अ गर्ल से कहि पकै चंती जते बेले चिन्नी को सॉरी अम्मु कहिची मु मध्य पढे पे चाहे तो तापरे रिप्लाई आसीची यू आर ओनली अ गर्ल तो गोटे जियो ऑफ व्हाट यूज विल एजुकेशन बी टू यू एजुकेशन माने शिक्षा तोर कोन काम रे आसीबो तू तो गोटे जियो पिलाटा You will get married even before you finish the third grade. तते यदि मो एजुकेशंस भी प्रोवाइड कली ना मध्य यदि लेखै देली स्कूल को पठे देली तोर तो बाहागर शीघ्र हो जिवो ना केबे ही जिवो बिफोर यू फिनिश द थर्ड ग्रेड तोर थर्ड ग्रेड फिनिश करिबा आगरु तोर बाहागर हो जिवो आ तू पढिबू केबे तते मु पढेबी केबे किछि लाभ नाही तते पढे की ए कथा सुनी की चिन्नीर कोन हेतिबो ई सॉरी अम्मुर कोन हेतिबो पुणी ता बापा कहउचंती चिन्नी विल गेट ए गुड जॉब चिन्नी को गोटे भलो जॉब मिलिबो इफ ही इज एजुकेटेड our father retorted dear student ये retorted means answer sharply से पूरा माने confidently sharply with much more surety he is telling the answer to अम्मु को से ए भले आंसर दोचंती जे अम्मु तोर पाठ पढले कोन हबो तू तो बाहागर तोर तो बाहागर ही जीवो केबे ना जते बेले तू थर्ड ग्रेड को पहुंची थु तो थर्ड ग्रेड सरी न थिबो तोर बाहागर ही जीवो किंतु चिन्नी को जदी हमें पढेबू से गोटे भलो जॉब करिवो त हमें सेति पई चिन्नी को पढिया पे चाहूचू तो एई भली आंसर सुनी की अमुर कोन हेथिबो अमु टर्न अवे टू हाइड हर टीयर्स अमुर लुह बाहरी गला तो लुह को लुचिया पई से बुली पडला एवं माने कांद लागिले तमे सामना करी की कांदी पारणी ना
you might have also observed that must be happen with you also jeti bele kando lagi thai tike lajo madhya asi thai je mu kandi pakaili mate dekhutile kon bhabuthibe tome luchi ki kandi tha. So in the same way Amu turned away to hide her tears. The student hide mane hela lucheva tara luho ku lucheva pai tears mane hela luho ku lucheva pai se tike turn karigala. Okay, she wished that her mother was alive এবং সে তা মনরে সে মন্থন কলা মনরে ভয়কু লাগিলা মো মা বঞ্চি থানতে কি she wished that her mother was alive ମୋ ମା ବଞ୍ଚି ଥାନ୍ତେ କି she would not have allowed Chelappa to speak so uncaringly ଯଦି ମୋ ମା ବଞ୍ଚି ଥାନ୍ତେ she would not have allowed ମୋ ବାପା Chelappa କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ allow କରି ନ ଥାନ୍ତେ এই ଭଳିଆ uncaringly କଥା କହିବା ପାଇଁ dear student caringly माने कौन care माने कौन जत्न नेबा you know caringly माने मध्य जत्न नेबा uncaringly prefix on लागि गला opposite हे गला okay opposite uncaringly माने कौन आमे देखि देबा तार मीनिंग बेखातिर भाबरे बा अजत्न भाबरे जदि आमे जत्न नेउने ताको आमे uncaringly बोली कहिबा तो एई जो चेलप्पार uncaringly जो कथाटा काहा को खराब लागिला अम्मु को खराब लागिला एवं से कहूची यदि मो माँ बंची थांते कि यदि से बंची थांते ए भलिया अनकेयरिंगली कथा कहवा को से केबे मध्य चेलप्पा को देई न थांते मो बापा को देई न थांते. So you just see the imagination of the girl. She was thinking good about her mother. Okay, next एठी हमें ता मार केयरिंग नेचर को हमें डिराइव करूचे एवं ता बापार अनकेयरिंगली नेचर टुवर्ड्स हर आमे मध्ये डिराइव करूचे. नेक्स्ट हमें जिबा हर मदर वुड हैव लेट अम्मू गो टू स्कूल. से भाबुची जे तार मां ताकू स्कूल को छाडिया को देई थांते एट लीस्ट टू लर्न द अल्फाबेट. जे स्टूडेंट लैंग्वेज पढिबार फर्स्ट सोपान कोन अल्फाबेट्स पढिबा. यू कैन एबल टू फाइंड अल्फाबेट्स इन द पिक्चर A, B, C, D up to Z in Odia language or up to Q you are learning. In Hindi also you are learning alphabet and whenever we are combining alphabets we are making words. Yes or no? तो से कहूची कम से कम मु alphabets तो पढ़ी थांती मो माँ यदि बंची थांते मते से स्कूल निश्चय पठे थांते. But here what it happening? Her father is not thinking about her. Her father is not bothering about her education. She is only focused upon whom? Her brother, that is Chinni. जेहेतु चिन्नी गोटे बॉय सेथि पई केवल चिन्नी को एथि फोकस करूछंती की चेलप्पा जी की होचंती अम्मुर फादर. द स्टूडेंट तापरे कोन हला हम देखिबा. Okay, so the various word we have understood. Uncaringly माने without care बेखातिर भाबरे अजत्न शील हेकी. Okay, next जिबा. लेट माने अलाउ एटा नोट डाउन करनियो. लेट अम्मू गो टू स्कूल माने ताकू पढिबा को देई थांती अनुमति देई थांते. ओके द स्टूडेंट तापरे कोन हला अम्मू के कहउचंती चेलप्पा ता कहउचंती अम्मू आई विल बी बिजी ऑल डे एट बिग हाउस. कम देयर एट 9 o'clock to clean the house. I want the new owner to get good impression but before that you clean our house. चेलप्पा सेड. ये स्टूडेंट एठी देखो डायरेक्ट स्पीच रे सेंटेंस गुडा लिखा जाइछि. जो इन्वर्टेड कमा देखि परथुबो उद्धृत चिन्ह यार अर्थ हैला वक्तांकर स्पीच को अविकल नकल लिखा जाइछि. ओके एठी हम राइटर को द्वारा अविकल नकल लिखा जाइछि. सो दिस इज द डायरेक्ट स्पीच. तो अम्मू बोले ताकू डाकी जंती आई विल बी बिजी ऑल डे एट द बिग हाउस. मो बिग हाउस रे पूरा बिजी थिबी व्यस्त थिबी. कम देयर एट 9 o'clock माने सेठी आ पचारि छंती कि अम्मू को तू जीवु ना नाही अम्मू बोली ना ताकू डायरेक्ट ही ऑर्डर दे दिछंती तू 9टा बेले आसीबू ना कोन करी आसीबू ना क्लीन द हाउस घर क्लीन करी के आसी माने घर क्लीन करबा को आसीबू. कम देयर एट 9 o'clock टू क्लीन द हाउस माने बिग हाउस को क्लीन करिया पई तू पहुंची पड़ केते बेले 9टा बेले. ये स्टूडेंट क्वेश्चन में भी आस्क्ड टू यू 9 o'clock मने पकाइबो. I want the new owner to get a good impression. ये स्टूडेंट देखो चेलप्पार गोटे दिमाग रे पसिछि कोन ना फर्स्ट इंप्रेशन विल बी द लास्ट इंप्रेशन. तो से चाहू नांती जे तांको झियो उपरे जो न्यू हाउस ओनर रो बैड इंप्रेशन रहू. बैड इंप्रेशन इन द सेंस कि ये ऑल्सोआ झियोटा माने
लेजी फेलो ना एंती कौन से जंती न भावंतु ताकू से एवर्न कर देची वार्न कर देची एवर कर देची तो से कहूची आई वांट द न्यू ऑनर टू गेट ए गुड इंप्रेशन इंप्रेशन माने कौन डियर स्टूडेंट धारणा एन आइडिया अबाउट समवन जनक प्रति सृष्टि होथुबा भावना बा धारणा में कहि परिबा ताकू हमें कोन बोली कहिथौ ताकू में कहिथौ इंप्रेशन. So when we are getting good impression, whenever we are doing all the things in proper time in a proper way, we are listening to our elders. So elders are having good impression with us. तो जेतेला हमें सुनी थाउ सब काम करि थाउ ठीक भाबे रहि थाउ आम प्रति बड़ मानकर गुड इंप्रेशन रहि थाए टीचर्स मानकर गुड इंप्रेशन रहि थाए सो वी मस्ट बी अ गुड वन एंड वी मस्ट डू गुड वर्क टू हैव गुड इंप्रेशन. नेक्स्ट बट बिफोर दैट यू क्लीन आवर हाउस चेलप्पा सेड. तापर से कहले ता आगरु तू आम घर किंतु सफा कर देथु सफा कला नै हमें देखिबा डियर स्टूडेंट यू कैन एबल टू फाइंड Ammu is cleaning her own house. Okay, so Ammu cleaned their home, which was a room in the servants' quarters of the big house. Dear student, Ammu ro ghar कोडी थिला ना से जो big house रो servants' quarters माने एठी हमें बासगृह कहि परिबा. ओके क्वार्टर्स माने हमें बासगृह कहि परिबा जोठी अम्मू एवं ता बापा रहुतले चिन्नी मध्य रहुतला एवं अम्मुर मांकर तो ऑलरेडी डेथ हे सारिची काहे कि ना हमें कॉन्टेक्स्ट टू बुझी सारले से कहूची जे मो मां जदी बंची थांते तो एठा में कोन बुझिले हियर ओनली 3 पर्सन किए से घर रहउचंती अम्मू चिन्नी एंड हा फादर. नेक्स्ट सो अम्मू क्लीन देयर होम which was a room in the servants quarter. Servants quarter servants मानकु जो बासगृह उडाक दिया जायतिला सेथि मध्यरु गोटे बासगृह रे को मान रहुतिले अम्मू ता बापा एवं चिन्नी. She washed all the clothes before having her own bath. से निजे गाधेबा आगरु सब कपड़ा मध्य सफा कर देला हैला तो एई काम सब कला ए भितर से खाद्य मध्य प्रस्तुत करथिबो एवं you can able to find in the picture also. तो हमें next slide को जिबा. She packed her father's lunch and walked to the big house. तो एई समय रे से कोन करछि देखो से पैक करिया माने कोन डियर स्टूडेंट बैग गुडा करे सब पैकिंग करिया माने कोन पैक करिया माने कोन टू पुट थिंग्स इनटू अ बैग से बैग रे सब खाद्य जहा भी किसी ता बापा को से नै दबो. लंच माने कोन मध्याह्न भोजन जहा को हमें कहिथाउ मिड डे मील कहिथाउ आ गोटे लंच कहिथाउ. लंच माने आफ्टरनून समय रे जो खाइबाटा हमें खाइथाउ तो हमें लंच कहिथाउ. ओके एवं सकाळ समय रे जो खाइबा हमें खाइथाउ तो ब्रेकफास्ट कहिथाउ. तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर super you must have this idea that dear students she packed her father's lunch and walked to the big house एवं एही समय रे से big house आड़ को अग्रगति करछि. So dear student today we have covered part 1 of this particular story. The first step रो प्रथम पार्ट रे आमे बहुत गुडे सीन देखिले. ए सीन रे किए थिले ना प्रथम पार्ट रे थिला अम्मू a 10 years old girl. चेलप्पा थिला जे कि अम्मू's father. चिन्नी थिला जे कि अम्मू's brother. And dear student, in advance I have written the name of the owner of the big house about whom we are going to learn in the part 2 of this particular story in my next class. See each the owner of the big house, Mrs. Mohan. And to know about this lady, the people of the neighbors also they were wondering, and including Chelappa, Ammu also going to meet her. So we are also going to meet her, and we are also going to know more about that new owner of the house in the next particular class. So dear student, in this part of the story we have 4 characters: Ammu, Chelappa, Chinni, and the owner of the big house. But we have not known that much about the owner of the big house. In advance, I have mentioned over here. So in the next class, dear student, we are going to learn all about this character. Okay, so this is Ammu, Ammu's father Chelappa, Chinni, who is, you can able to feel over here very in a jolly mode because Chelappa is planning to send him to school. And that is Mrs. Mohan photo I have taken over here just as a sample. Dear student, the summary of the story. So in this part what it happened you have already known. So this is the summary of the story.
that in this particular part we have learned the conversation in between a father and a daughter, and the daughter has prepared tea for her father, and the father has ordered her to come to that particular big house where he was working as a watchman. Okay, and he wants that particular girl child to be work as a reliable maid over there. Okay, so in this particular way, dear student, we have learned in this story, and at last also we have learned the eagerness that Ammu wants to have education just like her brother, but we are going to explore more whether she is going to get education or not in the next particular part of the story. So dear student, up to that you must learn all this particular part. Okay, Ammu clean her home first and then she walked to the big house packing her father's lawn. Up to this we have learned. So dear student, right now it is for your evaluation part. Whatever we have learned, how much you have got, so this is the time you are going to answer me. So I have few questions for all of you, few MCQs questions for all of you, because as this is non-detailed part, MCQs questions will come in the exam. So we will focus more upon the MCQs. Part 1 of this particular lesson has, these are the questions. So Ammu's was Dex, 7 years old, 6 years old, 10 years old, 11 years old. The student try to answer me. Raise your Option B, hand. 10 years old. Option Very B, good. 10 years old. Very good, very good. Excellent. So she is 10 years old. Very nice. Thank you. Have your seat. Who was Ammu's father? You need to recall the name of Ammu's father. O- Option B, Yes, correct. That is option B, Chalappa. Very good, dear student. Very good. Have you seen? Next question. Father order or asks Ammu to Dex. Police his shoes. Remove the sleep from her eyes. Make tea for him. Take the vessels of milk. Which things he has Option C. conveyed? Option C. That is Option make tea C. for him. Yes. Yes. Correct. Very good. Very good. So you have answered to the question and the answer is correct. That is make tea for him. ताको order दिया जाइଥିଲା चा तैयारी करिया पई एवं से चा तैयारी कला एवं आनिकी देला मध्य. Very good dear student. Next आमे जिबा question number 4 को. As Ammu blew on the flame, जेतेबेले से flame निया शिखा को फुंकु थिला सेही समय कौन हैला? Smoke came out, धुआं बाहरिला. Her eyes water from the smoke. तार जो धुआं बाहरिला ता आखिरे पानी बाहरी गला से धुआं पाई. The flames roach of शिखाटी बढ़ी चलला निया शिखाटी हु हु हे जळला ना she got burned ना she पुड़ी गला. कौन हैला सेही समय रे? What did happen? Answer me. option B, Option B. That is her Option eyes B. water from the smoke. Absolutely correct. Very good. Very good. Her eyes water from the smoke. Yes, it is correct. Where did Ammu's father work as the watchman? Ammur bapa कोठी कामा करथिले जणे watchman हिसाब Option C. in the valley, at the big house on the Option hill, C. in the Option house, C. in the neighborhood. option C. Option C. Are you sure option C? Yes. Say me yes sir or no sir again. Very good. Very good. Thank you. Have your seat. At the big house on the hill. Okay. Next jiba. The owner of the house died before how many months ago? से जो पुराना मालिक थिले बा जे भी मालिक थिले से केते दिन आगरु बा केते समय आगरु तांकर मृत्यु हेतिला. तो हमें खोजिबा a couple of years ago, a couple of weeks ago, a couple of months ago, a couple of days ago. Who can answer? Answer me Option B. quickly. Option B or you are Option telling B. B? Read the full sentence. Can you read the full sentence? Option B. Option B. Read the sentence dear, whatever it is there. A couple of months ago. Very good. A couple of months ago. And I told you couple means how much? Two. दुई जोड़ा. नहीं, जोड़ा. दी मास आगुरु. Yes, दी मास आगुरु. Very good. Yes. So a couple of months ago, तांकर मृत्यु हेतिला. So you have answered correctly.
Very nice, dear. Next time is question number 7. Chelappa needed money for Dax region to support the family, to buy milk for tea, to send Chinni to school, to fix off Amul's marriage. कोथि पाई चेलप्पा नीड करथिले मनी आवश्यक करथिले गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एवं इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट Option B. ऑप्शन बी योर आंसर इज करेक्ट यस टू सेंड चिन्नी टू स्कूल हाँ चिन्नी को स्कूल पठेवा पाई से पैसा आवश्यक करथिले एंड दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट चिन्नी इज डेक्स चिन्नी किए थिला चिन्नी इज डेक्स ऑलमोस्ट लिटिल ब्रदर ऑलमोस्ट सिस्टर Almost little brother. Chilappa's nice. Yes, almost little brother. Who has answer? You are correct. Okay, so you are correct and you have correctly answered here. Chinese is Ammu's little brother. Se Ammura sano bhai thila. Very good. Next jiba. Hearing her father's word. Jete bele bapa kahi pakaile toro education kon hobo. Tote to baha karai debu. ग्रेड 3 को आसीन माने ग्रेड 3 तोर सरन थिबो तोर बाहागर हे सारी थिबो तोर पाठ पढा कोन हो Option C. कोन माने स्टॉप टॉकिंग टू हर फादर burst into tears Option C. turn away to hide yes option C correct turn away to hide her tears सेठी के बुली पड़थिला तारा हाइड करथिला टीयर्स को माने लुह को लुचेवा पई सेठी के कोन करथिला बुली पड़थिला एवं कांदी थिला ओके very good next question number 10 who did the owner of the house want for her माने काहा को owner of the house चाहूथिले कोन पाई चाहूथिले काहा को चाहूथिले से चाहूथिले गोटे रिलायबल मेड से चाहूथिले गोटे फेथफुल सर्वेंट से चाहूथिले गोटे गार्ड से चाहूथिले जणे वॉचमैन तांको कोन गोटे दरकार थिला काहा को दरकार थिला ऑप्शन ए वेरी गुड तांको गोटे रिलायबल मेड रो आवश्यक थिला सो सी वांट टू बी अ रिलायबल मेड इन हर हाउस वेरी गुड रिलायबल मेड दैट इज गोटे विश्वसनीय बा विश्वस्त चाकराणींकर आवश्यकता थिला चेलप्पा सेज दैट अम्मो विल गेट मैरिड केबे बाहा हेजिबो बा केबे तारो बाहाघर कराई दिया जिवो बोली अम्मू को से कहितला चेलप्पा ना शॉर्टली आफ्टर चिनीज एजुकेशन इज कंप्लीटेड इवन बिफोर शी फिनिशेस द थर्ड ग्रेड इन अ कपल ऑफ मंथ्स व्हिच ऑप्शन विल बी एप्रोप्रिएट When before she finishes the third grade. very good excellent so student from Ujjalpur girls high school I think very good have you seen even before she finishes the third grade Ammu will get married so this particular statement is told by Chelappa to Ammu so this particular things had brought tears in the eyes of Ammu you might have remember okay and she turned away to hide her tears after that statement आमे बहुत बढ़िया के मने पकौत पारथुवे एबे हियरिंग हर फादर्स वर्ड्स अम्मू विश दैट जते बेले से सब कथा उडा कहूतिले अम्मूर बापा चेलप्पा अम्मू को अम्मूर माइंड को कोन आसिला दैट शी वुड डाई शी वुड लीव द हाउस हर मदर वाज एलिफ शी वुड रिटर्न टू हर से चाहूतिला जे से मरी जाऊ माने अम्मू भाबुतला कि मु मरी जाती के माने मु मरी जानती की ना शी कुड लीव द हाउस घर छाड़ी पळांती की ना हर मदर वाज एलिफ ना से चाहूतिला जे मो मां बंची थानते की एबे ना से चाहूतिला शी वुड रिटर्न टू हर ओके तो कोड आंसर हो Her mother was alive. yes hearing her father's His words mother was Ammu wished alive. that yes correct her Option mother C. was alive correct have you seen thank you have answer to the question that is the answer is her mother was alive se चाहूतला जे मो मां बंची थानते की ओके मो मां बंची थानते की काहे कि ना से चाहूतला जे जदी मो मां बंची थानते चेलप्पा को ए भले ऑन केयरिंगली जो कथा से कहूची कहबा को देई न थानते मो अपा को एंती ऑन केयरिंगली हेबा को देई न थानते मो मां निश्चित भाबरे मते स्कूल पठे थानते एटलीस्ट मो अल्फाबेट सिखि थानते डियर स्टूडेंट इन दिस वे यू हैव आंसर ऑल द एमसीक्यूज व्हाटएवर आई हैव ब्रॉट सो डियर स्टूडेंट राइट नाउ the homework page for all of you so I have 3 questions here okay you can able to find these are the 3 questions Thank you, who sir. are the characters in the story yes welcome who was Chelappa what did he tell Ammu did
Ammu want to go to school? How did her father react to Ammu's wish to go to school? So these are the three important questions. But dear student, as it is non-detail, you need to focus more upon MCQs because only MCQs questions are coming. But for your writing skills, I have set here, or I have given here 3 questions. So you can do, and you can show these are the answer of all these questions to your concerned teachers in the school. So dear student, up to that we have learned the part 1 of this particular story. In the next class we will explore who was that owner of the house and how she was and what happened to Ammu and what will be the particular part of the story we will explore in the next class. So dear student, up to that, thank you very much and thank you. Have a nice day.